भी चालू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैटरिंग क्या होता है ये हम डिफाइन कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ, लोगों ने तो लिखा नहीं है, पर ये लिखेंगे, पढ़ा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम आदित्य। और आदित्य आपको वो भेजना था बेटा, अभी तक भेजा नहीं है आपने। कैन यू क्विकली डू दैट, फोटो निकाल के भेजने का काम, जब तक मैं डिफिनीशन लिख रहा हूँ। आदित्य, हेलो। हाँ, क्या हुआ? दीदी वो 1 घंटे का ही थे, वो 1 घंटे में बंद हो जाएगा। ओके।
The Rayleigh scattering law is the intensity of scattered light is inversely proportional to fourth power of wavelength, provided the scatterer is smaller in size than wavelength of light. So the intensity of scattered light varies inversely inversely to the fourth power wavelength is the scattered size scattering particles is less than wavelength scattered light. Is that okay? So intensity of scattered light is inversely proportional to 1 to the power lambda to 1 by lambda to the power 4. ठीक है? This is my Rayleigh's law और ये क्या बताता है? The wavelength of shorter wavelength, the wave of shorter wavelength will be scattered more. The wave of longer wavelength will be scattered less. Right? The wave of longer wavelength will be scattered less, whereas wave of smaller wavelength be scattered. Is that okay? समझ में आ रही है बात?
यस सर। नोट नोट कर लिया हम लोगों ने। हाँ यस सर। सर। मेहर आपने। मेहर, आर यू डन? हेलो। Good. Let us move on to this again. According to this law, the short waves of violet light are scattered about 10 times more than longer wavelengths of red light. Is that okay? The other colors are scattered in to an intermediate extent. Phenomena based on scattering of light. The sky appears bluish. When we look at the sky, we receive sunlight scattered by fine dust particles, air molecules, and water vapor molecules present in the atmosphere. Since blue light, which is present in larger proportion than violet light in the sunlight, is scattered about 10 times more than the orange red light. The light reaching the eye is mainly blue, hence sky appears bluish. If the earth had no atmosphere, there were no scattered sunlight and the sky would have a black. In fact, the sky does appear black to the astronauts in the space above the earth atmosphere. Cloud appears white. अच्छा, can you all read this just? अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग. Cloud. A cloud appears white. Dependence of scattering on 1 upon lambda to the power 4 is valid only when scattered particles or molecules are much smaller than wavelength of light, as are air molecules. Clouds, however, contain water droplet or ice crystals that are much larger than lambda, and they hence scatter light of all wavelengths nearly equally. Hence, cloud appears white light. Appears white. ठीक है? Clouds, however, contain water droplets which are larger in size and larger वाले सारे colors को equally scatter करेंगे. Radius appearance of sun at sunrise and sunset. The scattering of light also explain radius appearance of sun at sunrise and sunset. At sunrise or sunset, the sun is nearer the horizon and sun rays reach the earth after passing through a maximum distance in the atmosphere. During this passage, light is scattered by air molecule and fine dust particles. Since scattering, most of the blue and neighboring colored light is scattered out before reaching the observer. Hence, light received by observer is predominantly red. Is predominantly red.
Okay. For a similar reason, the sun appears orange red in fog or mist. At noon, when sun is overhead, the sun rays travel minimum distance in the atmosphere and there is little scattering. Hence, the sun appears almost white, in fact, slightly yellowish because some blue light is scattered. ठीक है. Red light is used in danger signals. This is because that is least scattered. Because there is little scattering of red light passing through the atmosphere and hence the signal is seen distinctly from quite a large distance. This is why the banner used to stop the train, the cricket ball, the cross painted on ambulance are all red in color. Infrared photography is possible in fog and mist. There is almost no scattering of infrared rays by fine particles. Hence, these rays are able to penetrate fog and mist, and with aid of filters and special infrared photographic plates, clear pictures can be taken in dense fog. ठीक है? Now I'll be taking a few questions on it. This segment. Let us now again go to the this part. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एट व्हाट एंगल शुड द रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंटेड ऑन अ फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ refracting angle, that is angle of prism 60 degrees, so that it just suffers total internal reflection at other face. The refractive index of prism is 1524. ठीक है. इसमें हम लोगों ने एक रिलेशनशिप डेवलप करी थी इफ वी रिमेम्बर. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए नहीं था वो बेसिकली इमर्जेंस के लिए था, गैजिंग इमर्जेंस के लिए इफ वी रिमेम्बर करेक्टली. ठीक है. गैजिंग इंसिडेंस गैजिंग इमर्जेंस नहीं था, सिर्फ गैजिंग इमर्जेंस. ओके, दिस वाज द केस. इंसिडेंट रे को अगर थोड़ा सा और हम आगे लेकर के जाते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा या R2 बढ़ेगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा और क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होने लगेगा. सेकंड सा, राइट? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हेलो, ये बात समझ यस में सर. आई हम लोगों को? हाँ सर. ओके. तो इसके लिए क्या था, I1 हैज टू बी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू स्क्वायर -1 साइन ए माइनस कॉस ए. ठीक है. ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना होगा और इसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में. क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहना चाहिए? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हैज टू बी इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर -1 साइन ए माइनस कॉस ए. ठीक है. अब साइन इनवर्स, ठीक है, ले लिया हमने. रूट अंडर 1.524 का स्क्वायर. देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली आइदर विल नीड कैलकुलेटर और वी नीड अ लॉग बुक. साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री. ठीक है. साइन 60 इज √3/2 साइन इनवर्स रूट अंडर. ये रूट अंडर की वैल्यू जो है 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है. -1 will be 1.25. It will be equal to close to 1.2 के आसपास रहना चाहिए. 1.1 से 1.2 के बीच में रहेगा.
Okay, this thing is, this square root is equal to 1.15, precisely 1.15. Sin 30 is root 3 by 2 minus cos 60 is 1 by 2. ये कर लेंगे तो हमारा आएगा, this is coming out to be close to sine inverse 0.496, which is very much close to sine inverse 0.5, that is 1 by 2, and therefore angle I will be I1 will be very much close to 30 degree. Is that okay? Are we getting this? Yes, sir. ठीक है. It's close to 30 degree. The next question is, one face of prism of refracting angle 30 degree and refractive index 1.414, that is root 2 is silvered. At what angle must a ray of light fall on the unsilvered surface so that after refraction into the prism, the reflection at silver surface, it retraces its path. Okay. So हमारा डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा. This surface is, this angle is 30 degree. पाथ की retracing हो रही है after the and this surface, suppose this is silvered, ठीक है, and after reflection at the silvered surface it retraces its path. Retracing of path कब होगा? It will happen if and only if the incidented ray, right, the incidented ray, जो भी प्रिज्म पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं, that goes in such a way after refraction, ठीक है, थोड़ा सा और टेढ़ा होना पड़ेगा यहाँ पे, such that it becomes normal to the second surface.
तो सेकेंड सरफेस पर रिफ्लेक्ट होकर के ये इधर से जाएगा और फिर इधर से ही आ जाएगा, और किसी भी एंगल पर ये जाता है, ठीक है, किसी भी एंगल पर ये जाएगा अपार्ट फ्रॉम बीइंग परपेंडिकुलर ऑन द सेकेंड सरफेस, it will get reflected in a very different direction altogether. Is that okay? Are we getting this point or not? Yes, sir. Okay. अच्छा, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन जो है ये वाला है, एंड इट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल बाय अ वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, जो भी उसका है एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके हिसाब से वो हो रहा है। अभी हमको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढना है, हम लोगों को ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढना है। ठीक है, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये टोटल एंगल क्या होना चाहिए 60 डिग्री। इज दैट ओके? और वो 60 होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा 30 डिग्री। एम आई राइट? Right, sir. अब इस सरफेस पर अगर मैं म्यू लगाता हूं, ये जो है मेरा म्यू है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। आई हमको पता करना है, आर 30 डिग्री है पता चल गया है, और म्यू की वैल्यू है √2। दिस वैल्यू इज √2। 1.414 इज इक्वल टू √2। ठीक है, सो इसको मैं √2 लिख लूंगा। साइन आई मुझे पता करना है क्या होगा, और साइन 30 डिग्री है मेरे पास। साइन 30 इज 1/2, so sin I will become equal to √2 into sin 30, which is 1/2. Are we getting this point? That is √2 into 1/2. This will become 1/√2. अब sin के किस एंगल के लिए the value is 1/√2, I will become equal to 45 degree. Is that okay? Are we getting this point? Yes, sir. Meher, what about you, beta? And Kartavya, what about you? सर कल भी से वैसे ही इसी टाइप का लेक्चर रहेगा टॉपिक का। नहीं, कल कल का क्या शेड्यूल है तुम्हारा कर्तव्य? कर्तव्य, what is your schedule for tomorrow? Are you there? I'm unable to hear you. Kartavya, Yes, sir. I said, what is your schedule tomorrow? Tomorrow I have a chemistry class from 2 to 4. 2 to 4। Yes, sir. ठीक है, तो 4 to 5:30 हम लोग लेक्चर कर सकते हैं। Yes, sir. No problem. So 4:15 to 5:30. ठीक है, 4:15 to 5:45 हम लोग कर लेंगे, चलेगा। ठीक है, कल शाम को ले लूंगा। आज कितने बजे तक है? अभी 9:45 तक ले लेता हूँ, so that I can cover few questions. Third question is, a ray of light is incidented at an angle 60 degree.
on one surface of a 30-degree prism. ठीक है. The emergent ray from the prism makes an angle 30 degree with the incident ray. So that means angle of deviation is 30 degree with the incident ray. The next thing is so that emergent ray is normal to that of the surface from which it emerges. तो अभी इसको शो करने के लिए ज्योमेट्री बेसिकली हमको देखनी होगी. ज्योमेट्री से मोर और लेस ये प्रूव हो जाएगा इसमें. एंड अच्छा, उसके बाद ये है कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म. ठीक है. सो देयर इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑप्टिक्स आल्सो. Okay, so what is happening here is the angle of prism is 30 degree. The light ray is incidented at 90 degree on the angle of 60 degree. Upon falling here, it gets reflected, refracted. ठीक है. रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे फेज पर ये गया और फिर यहां से ये फर्दर इमर्ज करेगा. तो यहां पर ये इमर्ज जो करेगा फिर फाइनली मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल सच दैट ये वाला एंगल जो है इसका फ्रॉम इनिशियल रेज बिकम्स इक्वल टू 30 डिग्री. ये एंगल 30 डिग्री है. एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 30 डिग्री है. और ओके, इतना 30 डिग्री तो ठीक है.
देखो हमारा एक इधर रिलेशनशिप था, इफ यू गाइज रिमेम्बर। डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A. इज दैट ओके? इज इट विजिबल? दिस रिलेशनशिप, अभी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? फर्स्ट वन 30 डिग्री 60 डिग्री प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? 30 डिग्री है, और डेल्टा क्या है? ये भी 30 डिग्री है। इससे I2 की वैल्यू क्या आ रही है? 0। यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है 0 डिग्री है। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है? 0 डिग्री है। नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बना रहा है। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? दिस इंप्लाइज नॉर्मल इमर्जेंस। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर। ओके। मेहर आप कहाँ हो? डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A. That implies 30 degree is equal to 60 degree plus I2 minus 30 degree. This implies I2 is equal to 0. That is normal emergence. ठीक है? अभी ये अगर ये नॉर्मल इमर्जेंस कर रहे हैं, मतलब ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, ये 30 है, ये 60 हो गया। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू साइन I by sin R, which is equal to sin 60 degree divided by sin 30 degree. Sin 60 is √3/2 divided by 1/2. This is mu is equal to √3, which is equal to 1.732. Is that okay? ये बात समझा हम यस लोगों सर। को? यस सर। Can I move on to the next page? आपने पीडीएफ भी शेयर किया? क्या क्या? हमें पीडीएफ भी शेयर किया था उससे पहले जब भी आपने कराया था। PDF शेयर किया हुआ है और ये हमारा नहीं शेयर हुआ है। हाँ, ये नहीं, आपने जो लिखा है इससे पहले वो। कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसको नोट किया हम लोगों ने। अच्छा, PDF शेयर किया हुआ है तो उससे काम हो गया है। ठीक है, चलो।
The next question is, find the angle of incident at which a ray of monochromatic light should be incidented on first surface AB of a regular glass prism ABC so that emergent ray gases the adjacent surface AC. So गैसिंग इमर्जेंस का फिर से एक केस है ये. गैसिंग इमर्जेंस के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो फिर हम ज्योमेट्री का ध्यान रखेंगे कि यहाँ से ऐसे एंगल पर जाएगा सच दैट ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल हो. ठीक है, तो फिर ये फाइनल राइट रे जो होगा दैट विल इमर्ज एट गैजिंग इमर्जेंस. इज दैट ओके? इस केस में ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी इसमें हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढना है, एंगल आई. ओके, सी यहाँ पे वर्ड जो रेगुलर ग्लास प्रिज्म यूज किया गया है ना, रेगुलर ग्लास प्रिज्म का मतलब होता है इक्विलेटरल प्रिज्म. This means this angle has to be equal to 60 degree. Is that okay? ये एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मेरे पास है तो क्या हो गया? इसकी एक्चुअली कुछ खास जरूरत नहीं है. हम यहाँ से भी कर सकते हैं. देखो ये एंगल एक क्रिटिकल एंगल होगा, ये हमको पता है. ये वाला एंगल हम ढूंढ सकते हैं. ये एंगल हमारा, यानी ये एंगल 90 ये एक्चुअली ठीक है, पता रहना चाहिए. ये 60 है. दिस एंगल विल बी 120 डिग्री. ठीक है, ये वाला एंगल जो होगा R2 R1, this will be equal to 180 minus 120 plus C, that is 60 minus C. ठीक है, और C angle क्या होगा? So angle C is going to be, I mean we can write it as sin 90 upon sin C is equal to mu. Mu is refractive index of the glass. हेलो,
अरे EF of monochromatic light is incidented on refracting surface AB of a regular glass prism. Regular glass prism में मतलब फिर से this is going to be 60 degree or refractive index is mu. Mu is equal to 1.5 at an angle of incidence 55 degree. If it emerges through adjacent face AC, calculate the angle of emergence E. E हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। And we are given two values, sin 55 डिग्री की वैल्यू दी हुई है और sin 33.1 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले I दिया हुआ है तो हम R1 निकाल सकते हैं। Are we getting this point? Mu will be equal to sin I by sin R1. Is that okay? Sin R1 पता नहीं है तो sin R1 will be equal to sin 55 degree divided by mu, which is equal to 0.8192 divided by 1.5, making sense? Which is equal to 0.8192 into 2 divided by 3.2731 into 2, which is sin R1 is equal to 0.5462. 534 पर 0.534 पर 32.3 हुआ है, so this is going to be close to R1 is equal to 33 degree. Are we getting this point? अच्छा ठीक है, यहाँ पर दिया ही हुआ है 33.1 डिग्री, so ये एंगल हमको पता चल गया, ये एंगल पता चल गया। तो नेक्स्ट थिंग इज plus R2 सी। यहाँ पर एक और रिलेशनशिप हमारे पास होता है R1 प्लस R2 जो होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल पूरा 90 डिग्री होता है, ये एंगल भी 90 डिग्री होता है, राइट। और ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होता है। नहीं, ये एंगल का सम और ये एंगल का सम, पूरे एंगल का सम इज इक्वल टू ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम, जिसमें से ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। इसका सम और इसका सम विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म का सम, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। तो जिसमें से R1 हम ढूंढ चुके हैं, R2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी R2 plus R1 is equal to 60 degree. That implies R2 is equal to 60 minus 33.1. That is 26.9 degree. Is that okay? Next thing is ये angle of emergence जो है, यहाँ पर second surface पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से या फिर डायरेक्टली भी हम लगा सकते हैं, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे, म्यू जो होगा 1/μ हो जाएगा, ठीक है। सो साइन R1 बाई साइन E इज इक्वल टू 1/μ, दैट इज इक्वल टू 1/√.
1.5. That implies, sorry, R1 बोल रहा हूँ, R2. So sine 26.9 degree divided by sine E is equal to 2 by 3. ये 3/2 का 2/3 हो जाएगा. That implies sine E is equal to 3/2 times sine 26.9 डिग्री. अब इस साइन 26.9 डिग्री जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और द वैल्यू इज, ये वैल्यू भी देनी चाहिए थी. However, sin 26.9 degree is 4.5. 3/2 into 0.45, or that makes it multiplied by 3 divided by 2. It comes out to be 0.679. This is sin E, therefore E is equal to sin inverse 0.679, and this will be equal to it's coming out to be 42.8 degree. Is that okay? तो लेक्चर कब तक क्या है? क्या क्या? हाँ ठीक है, अभी मैं बंद लेक्चर कर रहा हूँ. बस बंद कर रहा हूँ.